The Cop and the Anthem का हिंदी अनुवाद होगा सिपाही और राष्ट्रगान। Henry, 1862 to 1910. William Sidney Porter, an American writer, is better known by his pen name O. Henry. Henry, 1862 to 1910, William Sidney Poikak है, जो अपने उपनाम O. Henry से अधिक प्रसिद्ध है. He was a voracious reader since childhood. वह बचपन से ही एक गहन पाठक थे. He started a humorous weekly, The Rolling Stone, and when the venture failed, he joined the Houston Post as a reporter, columnist, and occasional cartoonist. उन्होंने एक हास्य साप्ताहिक द रोलिंग स्टोन की शुरुआत की और जब ये प्रयास असफल हो गया तो उन्होंने ह्यूस्टन पोस्ट में रिपोर्टर, स्तंभकार और कभी-कभी कार्टूनिस्ट के रूप में काम किया. The story, The Cop and the Anthem, is one of O. Henry's well-known stories. कहानी Die Cop and det Anthem O. Henry की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है. To describe his style of writing, people have often used the term smile with tears, which implies his twisted way of thoughts and endings in almost every story. उनकी लेखन शैली को वर्णित करने के लिए लोग अक्सर आंसुओं के साथ मुस्कान शब्द का उपयोग करते हैं, जो उनकी विचारों और कहानियों के अंत की पेचीदा प्रवृत्ति को दर्शाता है. In this story, the main character Soapy is a vagabond and a person with a criminal background. इस कहानी में मुख्य पात्र सोपी एक आवारा और अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है. He makes different plans to re-enter the prison as he has no shelter to protect himself from the severe winter. वह फिर से जेल में प्रवेश करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाता है क्योंकि उसके पास कठोर सर्दी से बचने के लिए कोई आश्रय नहीं है. The story ends in an unexpected way. कहानी एक अप्रत्याशित तरीके से समाप्त होती है. O. Henry has depicted Soapy's futile attempts to get arrested in a very humorous vein. O. Henry ने सोपी के गिरफ्तारी के व्यर्थ प्रयासों को बहुत ही हास्यपूर्ण ढंग से चित्रित किया है. The Cop and the Anthem is about freedom and confinement. The Cop and Anthem स्वतंत्रता और बंधन के बारे में है. Initially, Soapy feels that there is freedom from miseries and worries in confinement, prison. शुरुआत में सोपी को लगता है कि बंधन में स्वतंत्रता, दुख और चिंताओं से मुक्ति है. The notes of the anthem transform him from within, and he resolves to work hard. राष्ट्रगान की धुन उसे भीतर से बदल देती है और वह कड़ी मेहनत करने का संकल्प लेता है. Soapy faces the irony of fate as the moment he realizes the real freedom lies in a virtuous life, he is taken into confinement. Soapy भाग्य की विडंबना का सामना करता है क्योंकि जैसे ही उसे एहसास होता है कि सच्ची स्वतंत्रता एक सदाचारी जीवन में है, उसे बंदी बना लिया जाता है. The Cop and the Anthem. Soapy left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt, where Broadway and Fifth Avenue flowed together. Soapy ने अपनी बेंच छोड़ दी और चौक से बाहर निकलते हुए उस समतल डामर की सड़क पर चल दिया, जहां Broadway और Fifth Avenue एक साथ मिलते हैं. Up Broadway he turned and stopped at a luxurious cafe. वह Broadway की ओर मुड़ा और एक शानदार कैफे के सामने रुक गया. Soapy had confidence in himself from the lowest button of his vest upward. Soapy को अपनी जैकेट के सबसे निचले बटन से लेकर ऊपर तक खुद पर पूरा भरोसा था. He was shaven and his coat was trim and his neat black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. वह दाढ़ी बना चुका था, उसकी कोट सही आकार में थी और उसकी सुंदर काली टाई उसे Thanksgiving Day पर एक महिला मिशनरी ने उपहार में दी थी. If only he could reach a table in the restaurant unsuspected, success would be his. अगर वह रेस्तरां में बिना किसी संदेह के एक मेज तक पहुंच सके, तो सफलता उसकी होगी. The portion of him that would show above the table would raise no doubt in the waiter's mind. मेज के ऊपर दिखने वाला उसका हिस्सा वेटर के मन में कोई संदेह पैदा नहीं करेगा. A roasted mallard duck, thought Soapy, would be about the thing with a bottle of wine and then some cheese, a cup of coffee, and a cigar. Soapy ने सोचा, एक भुनी हुई बतख, एक बोतल शराब, फिर थोड़ा नीर, एक कप कॉफी और एक सिगार ठीक रहेगा. $1 for the cigar would be enough. Cigar के लिए $1 पर्याप्त होगा. The total would not be so high as to call forth any extreme of revenge from the cafe management, and yet the meal would leave him filled and happy for the journey to his winter island.
कुल बिल इतना अधिक नहीं होगा कि कैफे प्रबंधन बदला लेने पर उतर आए और फिर भी भोजन उसे भरपूर और खुशहाल छोड़ देगा उसकी सर्दियों की यात्रा के लिए. But as Soapy set foot inside the restaurant door, the headwaiter's eye fell upon his tattered trousers and decadent shoes. लेकिन जैसे ही सोपी ने रेस्तरां के दरवाजे के अंदर कदम रखा, हेडवेटर की नज़र उसके फटे हुए पैंट और पुराने जूतों पर पड़ पड़ी. Strong and ready hands turned him around. मजबूत और तैयार हाथों ने उसे पलट दिया. Him about and conveyed him in silence and haste to the sidewalk and averted the ignoble fate of the menaced mallard. उसे चारों ओर घुमा दिया गया और चुपचाप और जल्दी से फुटपाथ पर पहुंचा दिया गया, जिससे उस धमकी भरी भुनी बथ की अपमानजनक किस्मत टाल दी गई. Soapy turned off Broadway. Soapy Broadway se mud gaya. It seemed that his route to the coveted island was not to be an easy one. ऐसा लग रहा था कि उसकी मनचाही जगह तक की यात्रा आसान नहीं होगी. Some other way of entering the limbo must be devised. निश्चित रूप से जेल में प्रवेश करने का कोई और तरीका निकालना होगा. At a corner of 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. 6th Avenue के एक कोने पर electric lights और plate glass के पीछे चालाकी से प्रदर्शित वस्तुओं ने दुकान की खिड़की को आकर्षक बना दिया. Soapy took a stone and dashed it through the glass. Soapy ने एक पत्थर उठाया और उसे शीशे पर मार दिया. People came running round the corner, a policeman in the lead. लोग कोने के चारों ओर दौड़ते हुए आए. सबसे आगे एक पुलिस वाला था. Soapy stood still with his hands in his pockets and smiled at the sight of brass buttons. Soapy जेब में हाथ डाले खड़ा रहा और पीतल के बटन देखकर मुस्कुराया. Where's the man that done that? Inquired the officer agitatedly. वो आदमी कहाँ है जिसने ये किया? अधिकारी ने घबराते हुए पूछा. Don't you think that I might have had something to do with it? Said Soapy with a friendly voice as one greets good fortune. क्या आपको नहीं लगता कि मेरा इससे कुछ लेना देना हो सकता है? Soapy ने एक दोस्ताना आवाज में कहा, जैसे कोई अच्छी किस्मत का स्वागत करता है. The policeman refused to accept Soapy even as a clue. पुलिस वाले ने सोपी को एक सुराग के रूप में भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया. Men who smash windows do not remain to chat with the police. जो लोग खिड़कियां तोड़ते हैं, वे पुलिस के साथ बातचीत करने के लिए नहीं रुकते. They take to their heels. वे भाग खड़े होते हैं. The policeman saw a man halfway down the block running to catch a car. पुलिस वाले ने देखा कि एक आदमी ब्लॉक के आधे रास्ते कार पकड़ने के लिए दौड़ रहा है. With drawn club, he joined in the pursuit. डंडा उठाकर वह पीछा करने में शामिल हो गया. Soapy, with disgust in his heart, drifted along, twice unsuccessful. Soapy अपने दिल में निराशा लिए इधर-उधर भटकता रहा, 2 बार असफल हुआ. On the opposite side of the street was a restaurant of no great pretensions. सड़क के दूसरी तरफ एक साधारण सा रेस्तरां था. It catered to large appetites and modest purses. ये रेस्तरां बड़े भूखों और छोटी जेबों वालों की सेवा करता था. Its crockery and atmosphere were thick, its soup and napery thin. यहाँ की crockery और वातावरण मोटे थे, इसका soup और napkin पतले थे. Into this place, Soapy betook himself without challenge. इस जगह पर Soapy बिना किसी रोक-टोक के चला गया. At a table, he sat and consumed beefsteak, flapjacks, donuts, and pie. एक मेज पर बैठकर उसने beefsteak, flapjack, donuts और pie खाई. And then he told the waiter the fact that the minutest coin and himself were total strangers. और फिर उसने waiter को बताया कि सबसे छोटा सिक्का और वह एक दूसरे के लिए अजनबी थे. Now get busy and call a cop, said Soapy, and don't keep a gentleman waiting. अब काम पर लगो और पुलिस बुलाओ, Soapy ने कहा. और एक सज्जन को इंतजार मत करवाओ. No cop for you, said the waiter, with a voice like butter cakes and an eye like the cherry in the Manhattan cocktail. तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं, वेटर ने मक्खन केक जैसी आवाज और मैनहट्टन कॉकटेल में चेरी जैसी आंखों से कहा. Hey, कौन? अरे, कौन? Neatly upon his left ear on the callous pavement, 2 waiters pitched Soapy. 2 वेटरों ने सोपी को सुस्त फुटपाथ पर उसके बाएं कान पर साफ सुथरे ढंग से फेंक दिया. He arose, joint by joint, as वह जोड़ से जोड़ उठ खड़ा हुआ, जैसे a carpenter's rule opens and dusted his clothes.
जैसे एक बड़ी का पैमाना खुलता है, उसने अपने कपड़े झाड़े. Arrest seemed now but an elusive dream. अब गिरफ्तारी एक कठिन सपना लग रही थी. The island seemed very far away. वह द्वीप बहुत दूर लग रहा था. A policeman who stood before a drugstore 2 doors away laughed and walked down the street. एक पुलिस वाला जो 2 दरवाजे छोड़कर एक दवा की दुकान के सामने खड़ा था, हंसा और सड़क पर चलता चला गया. Soapy was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. सोपी को अचानक ये डर लग गया कि किसी भयानक जादू ने उसे गिरफ्तारी से प्रतिरक्षित कर दिया है. He was in a state of panic, and when he came upon another policeman lounging grandly in front of a glittering theater, he caught at the immediate straw of disorderly conduct. वह घबराहट की स्थिति में था, और जब वह एक चमकते थिएटर के सामने एक और पुलिस वाले को आराम से खड़ा देखा, तो उसने अशोभनीय आचरण का सहारा लिया. On the sidewalk, Soapy began to yell drunken gibberish at the top of his harsh voice. Footpath पर Soapy ने अपनी कर्कश आवाज में शराबी बकवास चिल्लाना शुरू कर दिया. He danced, howled, raved, and otherwise disturbed the skies. वह नाचा, चिल्लाया, बड़बड़ाया और आसमान को परेशान किया. The policeman merely twirled his club, turned his back to Soapy, and remarked to a citizen. पुलिस वाले ने बस अपना डंडा घुमाया, Soapy की तरफ पीठ मोड़ ली और एक नागरिक से कहा, "'Tis one of them Yale lads celebrating the goose egg they gave to Hartford College. Noisy, but no harm." ये उन येल के लड़कों में से एक है जो हार्टफोर्ड कॉलेज को मिली हार का जश्न मना रहे हैं. शोर है, लेकिन कोई नुकसान नहीं. We've instructions to let them be. हमें इन्हें छोड़ने का निर्देश दिया गया है. Disconsolate, Soapy stopped his unavailing racket. उदास होकर Soapy ने अपनी बेकार की शोर मचाना बंद कर दिया. Would never a policeman lay hands on him? क्या कोई पुलिस वाला उस पर हाथ नहीं डालेगा? In his fancy, the island seemed an unattainable Arcadia. उसकी कल्पना में वह द्वीप एक अप्रापी यूटोपिया जैसा लग रहा था. He buttoned his thin coat against the chilling wind. उसने ठंडी हवा से बचने के लिए अपनी पतली कोट के बटन बंद कर लिए. In a cigar store, he saw a well-dressed man lighting a cigar at the swinging light. सिगार की दुकान में उसने एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी को झूलती हुई लाइट के नीचे सिगार जलाते देखा. He had set his silk umbrella by the door on entering. उसने दरवाजे के पास अपना रेशमी छाता रख दिया था जब वह अंदर गया था. Soapy stepped inside, grabbed the umbrella and sauntered off with it slowly. Soapy अंदर गया, छाता उठाया और धीरे-धीरे उसे लेकर चल दिया. The man at the cigar light followed hastily. सिगार जलाने वाला आदमी जल्दी से उसके पीछे हो लिया. My umbrella, he said sternly. मेरा छाता, उसने सख्ती से कहा. Oh, is it? Sneered Soapy, adding insult to petty larceny. Oh, क्या ये तुम्हारा है? Soapy ने व्यंगी करते हुए कहा, छोटे छोरी में अपमान जोड़ते हुए. Well, why don't you call a policeman? I took it. Your umbrella. Why don't you call a cop? There stands one on the corner. तो तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते? मैंने इसे लिया. तुम्हारा छाता. तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? वहां कोने पर एक खड़ा है. The umbrella owner slowed his steps. छाते के मालिक ने अपने कदम धीमे कर दिए. Soapy did likewise, with a premonition that luck would again run against him. Soapy ने भी ऐसा ही किया, ये सोचते हुए कि उसकी किस्मत फिर से उसके खिलाफ जा सकती है. The policeman eyed the two curiously. पुलिस वाले ने दोनों को जिज्ञासापूर्वक देखा. Of course, said the umbrella man. Well, you know how these mistakes occur. If it's your umbrella, I hope you'll excuse me. I picked it up this morning in a restaurant. If you recognize it as yours, why, I hope you'll... बिल्कुल, छाते वाले ने कहा. खैर, तुम जानते हो कि ऐसी गलतियां कैसे होती हैं. अगर ये तुम्हारा छाता है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ करोगे. मैंने इसे आज सुबह एक रेस्तरां में उठाया था. अगर तुम इसे पहचानते हो कि ये तुम्हारा है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम... Of course it's mine, said Soapy savagely. बिल्कुल ये मेरा है, Soapy ने क्रोधित होकर कहा. The ex-umbrella man retreated. वह पूर्व छाता मालिक पीछे हट गया. The policeman hurried to assist a tall blonde in an opera cloak across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. पुलिस वाला जल्दी से एक लंबे सुनहरे बालों वाली महिला को एक ओपेरा क्लोक में सड़क पार कराने के लिए आगे बढ़ा, जबकि 2 ब्लॉक दूर से एक स्ट्रीट कार आ रही थी. Soapy walked eastward through a street damaged by improvements. Soapy पूर्व की ओर एक सड़क से गुजरा जो सुधार कार्यों से क्षतिग्रस्त थी.
He hurled the umbrella angrily into an excavation. Usne gusse mein chhata ek khudai mein फेंक दिया. He muttered against the men who wear helmets and carry clubs. वह उन लोगों के खिलाफ बड़बड़ाया जो हेलमेट पहनते हैं और डंडे रखते हैं. Because he wanted to fall into their clutches, they seemed to regard him as a king who could do nothing wrong. क्योंकि वह उनके चंगुल में पड़ना चाहता था, वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह एक राजा हो जो कुछ गलत नहीं कर सकता. At length, Soapy reached one of the avenues to the east where the glitter and turmoil was but faint. आखिरकार सोपी पूर्व की ओर एक सड़क पर पहुंचा, जहां चमक और हलचल कमजोर थी. He dragged himself toward Madison Square, for the homing instinct survives even when the home is a park bench. वह Madison Square की ओर खींचता हुआ चला, क्योंकि घर वापस जाने की प्रवृत्ति तब भी जीवित रहती है जब घर एक पार्क की बेंच हो. But on an unusually quiet corner, came to a standstill. लेकिन एक असामान्य रूप से शांत कोने पर सोपी रुक गया. Here was an old church, quaint and rambling and gabled. यहाँ एक पुराना चर्च था, विचित्र और फैला हुआ और गुंबददार. Through one violet-stained window, a soft light glowed, where no doubt the organist loitered over the keys, making sure of his Sabbath anthem. एक बैंगनी धब्बेदार खिड़की से एक नर्म रोशनी चमक रही थी, जहां निस्संदेह organवादक चाबियों पर समय बिता रहा था. आने वाले सब्बात एंथम पर अपनी महारत सुनिश्चित कर रहा था. For there drifted out to Soapy's ears sweet music that caught and held him transfixed against the convolutions of the iron fence. सोपी के कानों में मधुर संगीत की धारा बही, जिसने उसे लोहे की बाड़ की घुमावदार आकृतियों के सामने जकड़ लिया. The moon was above, full and radiant. Vehicles and pedestrians were few. Sparrows twittered sleepily in the eaves. चांद ऊपर था, पूरा और चमकदार. वाहन और पैदल यात्री कम थे. छतों पर गौरैया नींद में चहचहा रही थी. For a little while, the scene might have been a country churchyard. कुछ समय के लिए यह दृश्य एक ग्रामीण churchyard जैसा लग रहा था. And the anthem that the organist played cemented Soapy to the iron fence, for he had known it well in the days when his life contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and collars. और वह anthem जो organवादक बजा रहा था, सोपी को लोहे की बाड़ से जोड़ता गया, क्योंकि वह इसे तब से अच्छी तरह जानता था जब उसके जीवन में मांग, गुलाब, महत्वाकांक्षाएं, दोस्त, शुद्ध विचार और कॉलर जैसी चीजें हुआ करती थीं. The conjunction of Soapy's receptive state of mind and the influences about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. सोपी के ग्रहणशील मन की अवस्था और पुराने चर्च के आसपास के प्रभावों ने उसकी आत्मा में अचानक और अद्भुत परिवर्तन ला दिया. He viewed with rising horror the pit into which he had tumbled, the degraded days, unworthy desires, dead hopes, wrecked faculties, and base motives that made up his existence. उसने बढ़ते भाई के साथ उस गड्ढे को देखा, जिसमें वह गिर चुका था. अपमानजनक दिन, अयोग्य इच्छाएं, मृत उम्मीदें, बर्बाद क्षमताएं और नीच उद्देश्य जो उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे. And also in a moment his heart responded thrillingly to this strange mood. और एक पल में ही उसका दिल इस अजीब मूड पर जोश से प्रतिक्रिया देने लगा. A strong impulse moved him to, एक शक्तिशाली प्रेरणा ने उसे battle with his desperate fact. अपने निराशाजनक सत्य से लड़ाई. He would pull himself out of the mire and would make a man of himself again. वह खुद को कीचड़ से बाहर निकालेगा और फिर से खुद को एक इंसान बनाएगा. He would conquer the evil that had enslaved him. वह उस बुराई पर विजय प्राप्त करेगा जिसने उसे गुलाम बना रखा था. There was time, he was young yet. अभी समय था, वह अभी भी जवान था. He would resurrect his old eager ambitions and pursue them without faltering. वह अपनी पुरानी उत्साही महत्वाकांक्षाओं को पुनर्जीवित करेगा और बिना डगमगाए उनका पीछा करेगा. Those solemn but sweet organ notes had set up a revolution in him. वह गंभीर लेकिन मधुर organ की धुनों ने उसके भीतर एक क्रांति पैदा कर दी थी. Tomorrow he would go into the roaring downtown district and find work. कल वह शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाकर काम ढूंढेगा. A fur importer had once offered him a place as driver. एक फर आयातक ने एक बार उसे ड्राइवर की नौकरी की पेशकश की थी. He would be somebody in the world. वह दुनिया में कुछ बन जाएगा. Soapy felt a hand laid on his arm. Soapy ने अपने हाथ पर एक हाथ रखा हुआ महसूस किया. He looked quickly around into the impassive face of a policeman.
उसने जल्दी से मुड़कर एक पुलिस वाले के निस्पृह चेहरे को देखा। What are you doing here? asked the officer. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अधिकारी ने पूछा। Nothing, said Soapy. कुछ नहीं, Soapy ने कहा। Then come along, said the policeman. तो चलो, पुलिस वाले ने कहा on the island, said the magistrate in the police court the next morning. 3 महीने द्वीप पर, अगले दिन पुलिस अदालत में magistrate ने कहा, O Henry,